welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 5, and the name of the chapter is decimals, right? So let's see कि decimals कैसे हमारी real life से connected है, right? So it says that we have learned that a fraction is a part of a whole. कि हमने पढ़ा है कि जो फ्रैक्शन है वो होल का एक पार्ट होता है. 5/12, 9/10, 3/7 and 1/8 रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस. ये सभी हमें फ्रैक्शंस ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Fractions that have 10, 100 or 1000 or any multiple of 10 as the denominator are called decimal fractions. ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या फिर कोई भी 10 का मल्टीपल होगा, उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शंस के नाम से जानते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं. करेक्ट. देन द डेसिमल फ्रैक्शंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर्स. कि डेसिमल फ्रैक्शंस को हम डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं विद अ पॉइंट और नो डिनोमिनेटर, राइट. एक डेसिमल पॉइंट की मदद से या फिर बिना डिनोमिनेटर के. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. इसे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू. द अबव डेसिमल फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज फॉलोज. कि जो डेसिमल फ्रैक्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ये हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. जैसे 1/10 दिया गया है, तो 10 में वी हैव 1 0 एंड वील काउंट वन फिगर फ्रॉम द राइट साइड एंड वील पुट अ डॉट आफ्टर दैट. So it becomes 0.1. Same goes with 12/10. We have 1 0. We'll count one digit from the right side and we put a dot between these. So it becomes 1.2. Same goes with 1.15 and same goes with 0.999. Clear? Let's learn more about decimal numbers in this chapter. अब इस chapter में हम decimal numbers के बारे में और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक decimal number आखिर क्यों होता क्या है, ये जानते हैं. So it says a decimal number has a whole number and a fractional part separated by a decimal separator denoted by a decimal point or a dot. कि एक डेसिमल नंबर एक होल नंबर होता है जो कि फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दैट इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द डेसिमल सेपरेटर डिनोटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट और डॉट, राइट. तो 34.72 यानी कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है, डॉट है, दिस इज नोन एज द डेसिमल सेपरेटर. जो ये पॉइंट से पहले नंबर है, इट इज अ होल नंबर एंड द नंबर आफ्टर द डेसिमल इज द फ्रैक्शनल पार्ट. क्लियर? The whole number is always to the left of the decimal point. कि जो whole number है वो हमेशा decimal point के left side पर ही आता है. The fractional part is always to the right of the decimal point. कि जो fractional part है वो हमेशा decimal point के right side में आता है. For example, 25.42, 8.97, 4.5 in a decimal number. Place value of each decreases 10 times as we move from left to right by one place, right? तो अगर एक डेसिमल नंबर हमें दिया गया है तो हर नंबर की जो वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू होगी, वो हर डिजिट से डिक्रीज होती जाती है 10 टाइम्स जब हम उसके लेफ्ट साइड पर चलेंगे तब, राइट. एज शोन ओवर हेयर, होल नंबर्स आर हेयर एंड फ्रैक्शनल पार्ट हेयर. डेसिमल पॉइंट इन द मिड एंड फ्रॉम डेसिमल पॉइंट से अगर हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो इट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. बट इफ वी मूव टुवर्ड्स द राइट साइड, इट इज टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. दैट मीन्स 1/10, 1/100, 1/1000. Clear? Now next topic that we have is expanded form of decimals. So अब ये expanded form of decimals क्या है, इसका पता लगाते हैं. So it is the expanded form of a number represents that number as a sum of the place values of all its digits. कि जो expanded form होता है एक नंबर का, वो हमें बताता है कि उसकी सभी digits का place value को sum जो होता है वो होती है expanded form.
फॉर एक्सपेंशन ऑफ एनी नंबर वी मस्ट बी अवेयर ऑफ प्लेस एंड प्लेस वैल्यूज, कि अगर हमें किसी भी नंबर का एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, तो हमें उन सभी के प्लेस और प्लेस वैल्यूज का पता होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल है एक्सपेंड 782.182. On writing the given numbers in words, we have 700s, 8 tens, 2 ones, 1 tenths, 800s and 2000s, right? तो हमें इस तरीके से ये नंबर रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास है 700 प्लस 80 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 100 and then 2 upon 1000, right? Thus, the expanded form of 782.182 is 700 plus 80 plus 2 plus 1 upon 10, 8 upon 100 and 2 upon 1000. Clear? Now, next topic is standard form or short form of decimals. अब इन सभी नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती हैं? So it says the standard form of a decimal can be written with the help of its expanded form. कि जो decimal की standard form होती है वो हम expanded form की मदद से लिख सकते हैं. It is the way in which we write a number normally written. Right? कि ये एक तरीका है जिससे हम एक नंबर को normally लिखते हैं. Right? So it is write the standard form of 7,000 plus 70 plus 9 plus 3 upon 10 plus 8 upon hundreds and 5 upon 1000. तो हम इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं and the number becomes 7079.385. Clear? Now we have the topic which is reading decimal numbers. अब हम इन डेसिमल नंबर्स को कैसे रीड करेंगे वो जानते हैं. सो डज वी कैन रीड अ डेसिमल नंबर 15.37 इन टू वेज, कि हम इस नंबर को, डेसिमल नंबर को दो तरीकों से पढ़ सकते हैं. 15.37 because each digit after the decimal represents either tenths, hundreds or thousands, right? तो हम इसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं 15.37 क्योंकि हर डिजिट डेसिमल के बाद रिप्रेजेंट करता है टेंथ, हंड्रेड या फिर थाउजेंड्स को, राइट? और इट कैन बी रिटन एज 15 and 37 hundredths. Clear? Now, next we have the exercise in which the very first question says identify the place value of the underlined digits. तो अब हमें अंडरलाइन डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यू है उनका पता लगाना है. जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें 7 पर अंडरलाइन है. तो हमें पता है डेसिमल के बाद इट इज हंड्रेड्स, इट इज टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड द थाउजेंड्स. तो 7 अपॉन हंड्रेड्स हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें इन ब्लैंक्स में भरना है. सो इट इज 0.381 को एक्सपैंडेड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इट इज 3 tenths, 800s and 1000ths. Clear? Same as here also in the given parts. Then moving ahead to question number 3. It says write the following decimal numbers in expanded form. तो अब जल्दी से इन डेसिमल नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं, राइट? लेट्स टेक दिस वन. Says 48.459. So 40 plus 8 plus 4 upon 10 plus 5 upon 100 plus 9 upon 1000. And hence we have done the expanded form of the following numbers, right? Then it is write the following in the decimal form. अब हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है. लेट्स टेक दिस वन. क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में कोई नंबर है ही नहीं तो 0 पॉइंट आ जाएगा.
और 7 और 3। अब वी कैन सी कि सबसे पहले अपॉन 10th आता है, पर 10th यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो 10th की जगह पर भी हम 0 प्लेस करेंगे एंड देन we'll write 7 and 3. Clear? Then write the decimal number for the following. अब हमें इनके लिए decimal number लिखना है. So ये ले लेते हैं, जैसे कि 9.8 है, so we'll write simply it as 9.8. Then it is 1675 thousandths, right? So it says 1600ths, right? 1600 and 0.75 thousandth. Clear? Then moving ahead, we have the next topic, that is like and unlike decimals. अब ये like और unlike decimals कौन से हैं? So it is study the following decimal numbers. जल्दी से इन सभी decimal numbers को पढ़ते हैं. What do you think is common between them? हम क्या देख सकते हैं कि इन सभी digits में क्या common है, right? So सबसे पहले पढ़ते हैं जो like decimals हैं इनके बारे में, right? Like decimals are the numbers which have the same number of decimal places. Like numbers कुछ ऐसे decimal numbers हैं जिनके पास same number of decimal places होती हैं, जैसे कि point के बाद 2 ही digits हैं हर number में, right? All the above decimal numbers have 2 decimal places, hence they are the like decimals. क्योंकि इन सभी numbers के पास point के बाद 2 digits हैं, तो ये सभी like decimals हैं, right? अब वहीं दूसरी तरफ आते हैं unlike decimals. ये unlike decimals क्या हैं? These are the decimal numbers which have different number of decimal places. ये कुछ ऐसे decimal numbers हैं जिनके पास अलग अलग different number decimal places हैं. For example, 2.16, 5.339, 6.5. Clear? Then next we have conversion of unlike decimals to like decimals. अब हमने देखा कि unlike decimals में नंबर के बाद पॉइंट के बाद हर नंबर में अलग डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सिर्फ एक ही है. सो अब हम कैसे इन अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो जानते हैं. सो इट सेज to convert unlike decimals to like decimals, first find the decimal which has the highest number of decimal places. तो अगर हमें unlike decimals को like decimals में convert करना है तो सबसे पहले ढूंढना होगा decimals को जिनके पास highest number of decimal places हो. Now add 0 after the decimal point as required. अब हम डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर की हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उतने जीरोस उन बाकी डिजिट्स में ऐड कर देंगे, राइट? सो अनलाइक डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल्स बाय एडिंग 0 एट द एंड. तो इसीलिए अनलाइक डेसिमल्स के एंड में 0 लगाकर हम उन्हें लाइक डेसिमल्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अनलाइक डेसिमल्स कन्वर्टेड टू लाइक डेसिमल्स. So this 5.300, 13.020, 0.925, 32.170, 5.300, 13.020, 0.925 and 32.170. Clear? Now we have the next topic, that is comparison of decimals. तो अब हम इन डेसिमल डिजिट्स को कैसे कंपेयर करते हैं? सो इट इज फर्स्ट कंपेयर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द डेसिमल. सबसे पहले डेसिमल्स के इंटीग्रल पार्ट्स को हम कंपेयर करेंगे. द डेसिमल विद बिगर इंटीग्रल पार्ट इज बिगर. तो जिस डेसिमल का इंटीग्रल पार्ट बड़ा होगा उसे हम ग्रेटर नंबर कंसिडर करेंगे, राइट? जो इंटीग्रल पार्ट यानी पॉइंट से पहले का नंबर. क्लियर? If the integral parts of the decimals are the same, start comparing from the tens place. अगर integral part same है तो हम
10th प्लेस पर जाना शुरू कर देंगे. The decimal with the greater digit in the same place is greater. कि अगर जो भी नंबर बड़ा होगा डेसिमल प्लेस पे आने के बाद उसी को हम ग्रेटर नंबर कंसिडर कर लेंगे. राइट. नाउ वी हैव एग्जांपल 3 says which is greater 3.79 और 4.83. तो अब हम इन इंटीग्रल पार्ट्स को कंपेयर करें तो 3 और 4 हैं जो कि अलग अलग हैं एंड वी नो 4 is greater than 3. Therefore we are clear that 3.79 is less than 4.83. Clear? अब नेक्स्ट है विच इज स्मॉलर 19.683 या फिर 19.684. सो हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई? वी आर गोइंग टू कंपेयर देयर इंटीग्रल पार्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि दोनों सेम है 19 एंड 19. करेक्ट. अब हम 10th प्लेस पर जाते हैं जो कि है 6 और यहाँ पर भी है 6. क्योंकि ये सेम है, लेट्स मूव टू द 100th प्लेस विच इज 8 and 8. Again they are same. Let's move to the 1000th place which is 3 and 4. So we got to know the difference that 4 is the greater one. So therefore we can say that this 1.9683 is less than 19.684. Clear? Then next we have arranged 3.03, 3.003, 4.01, 3.130, 4.001 in ascending order and descending order. तो अब हमें इन्हें ascending और descending दोनों ही orders में arrange करना है. तो comparing करेंगे हम decimals की, हमें पता लगा कि 3.003 is less than 3.03 is less than 3.130 is less than 4.001 is less than 4.01. Clear? So ascending order बन जाता है यही order और descending order में हम इसको reverse कर देंगे. Clear? Now we have the exercise which says convert unlike decimals into like decimals. तो पहला पार्ट लेते हैं जहां पर हमें सबसे हाईएस्ट डिजिट्स निकालनी है पॉइंट के बाद की. तो वी कैन सी यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है बट यहाँ पर 1 है, तो हम सिंपली 0.90 कर देंगे और 300.30 कर देंगे एंड हेंस दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर लाइक डेसिमल्स फॉर्म. क्लियर? नाउ वी हैव टू कंपेयर in the decimal numbers. Let's see how we can do this. So it is 132.67 and 132.77. क्योंकि integral parts इनके same है तो let's move to the 10th place which is 6 and 7. We are very simply clear that 7 is greater than 6 and this is greater than the other number. Clear? Then it is write the following in ascending order. अब हमें इन numbers को ascending order में लिखना है. So क्योंकि हम देख सकते हैं इंटीग्रल पार्ट पे 36, 36, 36 और 36 ही है. Let's move to the 10th place which is 9, 1, 0, 1. तो अब सबसे छोटा कौन सा है? क्योंकि we are talking about ascending order तो we are going for the order which is smaller to the greater digit. तो स्मॉलर डिजिट कौन सा है? इट इज 9, 1, 0, 1. सबसे छोटा डिजिट है 0. सो वील राइट 36.091. देन द सेकेंड नंबर ग्रेटर देन 0 इज 1 and 1 over here. Again they are same. Let's move to the 100th place which is 0 and 9. Right? So we all know that 0 is the smaller one. So let's write 36.109. Then automatically this number we get 36.190 and at the end it comes 36.910. Hence we have converted these, we have arranged these numbers into their ascending order. Right? Then राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है. राइट? सो अब लेट्स टेक द बी पार्ट. सो इंटीग्रल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं विच इज 1, 11,
111, 1 and 11. तो सबसे बड़ा कौन सा है? We all got that 111.01 is the greater one. Then 111 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट है इट इज 11 and 11. अब 11 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर भी है. क्योंकि ये सेम है, let's go for the 10th position which is 1 here and 0 here. So this is greater. So we'll write 11.11 and then it comes 11.001. Right? फिर उसके बाद आता है 1 और 1. अब क्योंकि इंटीग्रल पार्ट सेम है, लेट्स मूव टू द 10th प्लेस विच इज 1 and 1 अगेन. अब फिर ये दोनों सेम है, लेट्स मूव टू द 100th प्लेस विच इज 1 and 0. Automatically we got the point that 1 is greater, so we'll write 1.111, 1.111 and 1.101. Right? Hence, they are converted into their descending orders. Now, moving ahead to the next topic, which is addition of decimals. तो अब decimals के addition की बात करते हैं. So it says to add decimal numbers, follow the steps. decimal numbers को add करने के लिए हमें ये steps follow करने हैं. Step 1, if the given decimals are not like decimals, change them into like decimal. अगर दिए गए decimals like decimal नहीं है तो उन्हें सबसे पहले like decimal में change करना है. Step 2, write the decimals in columns. Keep the decimal points in the same column. The digits having the same place value should be in the same column. Decimals को columns में लिखना है और decimal को same keeping the decimal points in the same column. Decimal points को same column में रखना है. Digits जिनके पास same place value होगी should be in the same column. उन्हें same column में ही रखना है. Add as in the case of ordinary numbers. उसके बाद हमें add करना है जो कि ये ordinary numbers में होंगे. Right? In the sum, put the decimal point in the column of the decimal points. कि अब हमें sum में decimal points को decimal points के नीचे ही रखना है and then we have to add them. Right? Example दिया गया है, add 609.3372 and 81.2593. As we can see, point के बाद same number of digits हैं. That means they are the like decimals. We have to simply add them. Right? 609.3372 plus 81.2593, that gives the answer, that is 690.5965. Clear? Now, next we have the subtraction of decimals. अब subtraction के लिए भी we have to follow some rules. That says to subtract decimal numbers, follow these steps. Decimal numbers को subtract करने के लिए ये steps follow करते हैं. Step 1, change the given decimals into like decimals. Given decimals को like decimals में change करेंगे. Step 2, write the greater number on top and the smaller below. जो बड़ा number है उसको ऊपर रखना है, जो छोटा number है उसको नीचे रखना है, so that the decimal points of both the numbers are in the same column. ताकि जो decimal points हैं दोनों ही numbers के वो same column में आ सके. Step 3, subtract as in the case of ordinary numbers. स्टेप 3 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है और बिल्कुल ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह जैसे हम यूजुअली करते हैं. स्टेप 4, इन द डिफरेंस पुट द डेसिमल पॉइंट इन द कॉलम ऑफ डेसिमल पॉइंट. और जो डिफरेंस आएगा, जो आंसर आएगा, तो उसमें डेसिमल हमें वही लगाना है जहां बाकी दोनों डेसिमल्स लगे हुए हैं ऊपर के डिजिट्स में. राइट? एग्जाम्पल है, सब्ट्रैक्ट 95.5722 फ्रॉम 281,703. अब हम देख सकते हैं कि ये लाइक डेसिमल्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद और यहाँ पर है 4 डिजिट्स. राइट?
क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो हमें इसे ऊपर रखना है और 3 के बाद 0 ऐड कर देंगे to convert this into the like decimal. Then putting 95.572 below it and subtracting it very easily, and the answer comes 123.1308. Clear? Now we have the exercise which says add the following. इन्हें add करना है. Let's add them. So it is 3 plus 0 is 3. 2 plus 5 is 7. 6 plus 2 is 8. 6 plus 1 is 7. Then we have point, so we'll put a point. 5 plus 0 is 5. 7 plus 2 is 9. And 7 plus 4 is 11. And 1 plus 1 is 2. So hence the answer becomes 2195.7873. Clear? Next, solve the following. अब हमें इन्हें solve करना है. So first of all, we need to convert the picked numbers into their liked form. Let's take this one, which is already in its liked form. And now let's arrange these numbers into their specific columns. 3.492 plus 2.526. 6 plus 2, 8. 9 plus 2, 11. 5 plus 4, 9 plus 1, 10. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. So the answer becomes 6.018. Clear? Next is subtract the following. इन्हें subtract करते हैं. 5 minus 4 is 1. 5 minus 7 isn't possible. Let's borrow 1 and write 5 over here instead of 6. 15 minus 7 is 8. Then 5 minus 7 again isn't possible. Again we borrow 1 and write 0. 15 minus 7 is again 8. 0 minus 9 isn't possible. Taking 1 carry and writing 6 instead of 7. 10 minus 9 is 1. Then 6 minus 5 is again 1. 6 minus 8 isn't possible. Taking 1 borrow and writing 2 instead of 3 over here. 16 minus 8 is 8. 2 minus 4 isn't possible. Taking 1 borrow from here again. 12 minus 4 is 8 again, and 1 is 1. So the answer becomes 1881.1881. Clear? Then solve the following. Again, as simple as it. Let's take this one, arranging the numbers in the proper column so that decimal comes below decimal. Let's subtract it now very easily. 7 minus 5 is 2, then point. 5 minus 3 is 2, then 0, 1 minus 1. So the answer becomes 2.2. Clear? Now, beginning with the next topic, which is multiplication by decimals. अब डेसिमल्स के थ्रू हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो जानते हैं. एंड द टॉपिक इज मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर. सो अब हमें एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, राइट. एंड इट सेज मल्टीप्लाई 0.708 बाय 16. तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं which says we first multiply the numbers as if we are multiplying whole numbers by ignoring the decimal point. तो हम सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हम होल नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे. डेसिमल को हम वहां पर बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, राइट, एज वी हैव डन इट ओवर हियर. Then step 2 says now we put the decimal point in the product in such a way that there are as many decimal places in the product as in the given decimal multiplicand. राइट. और अब हम आंसर निकालने के बाद उसमें उतने ही प्लेसेस बाद पॉइंट लगा देंगे जितने की हमारे पास मल्टीप्लिकेंड में थे. जैसे कि वी वर हैविंग 3 डिजिट्स आफ्टर पॉइंट, तो हम 3 डिजिट्स राइट साइड से काउंट करके 3 डिजिट्स बाद ही वहां पर एक डेसिमल को प्लेस कर देंगे. सो द प्रोडक्ट डेसिमल विल बी प्लेस्ड आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. तो इसीलिए प्रोडक्ट में जो डेसिमल है वो प्लेस किया जाएगा राइट से 3 डिजिट्स काउंट करने के बाद. सो 0.78 multiplied by 16 gives 11.328.
Clear? Then next we have multiplication by decimals. Multiplication of decimals by 10, 100 and 1000. तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे 10, 100 और 1000 से? तो move the decimal point to the right as many places as the number of zeros in the multiplier. Right? तो जितने भी zeros होंगे हम उन्हीं digits बाद decimal को shift कर देंगे. Just like for example 3.024 multiplied by 10. So क्योंकि 1 0 है तो हम पॉइंट को एक ही डिजिट बाद शिफ्ट कर देंगे. तो 30.24 1 0 in 10, move the point 1 place to the right. Correct? Same in 3.024 by 100 is equal to 302.4. 2 zeros in 100, move the point 2 places to the right. 3.024 gives 3.2024 multiplied by 1000 gives 3024, that is 3 zeros in 1000. Move the point 3 places to the right. Correct? Next, division of decimals. Decimals को कैसे divide करेंगे? So it says divide. पहला topic है हमारा dividing a decimal number by a whole number. कि हम decimal number को एक whole number से divide करेंगे. So example है divide 16.62 by 3, 129.36 by 15. तो 16.62 को पहले 3 से divide करते हैं. Step 1, we divide the decimal number as we divide the whole number. कि हम divide करेंगे decimal number को जैसे कि हम whole number divide कर रहे हैं. Right? So it is 16.62 divided by 3, which gives 5.54. Right? And we put the decimal point in the question right above the decimal point of the dividend. जैसे ही हमें डिविडेंड में पॉइंट मिलेगा उसी तरीके से हम क्वेश्चन में भी पॉइंट को प्लेस कर देंगे. Because as we reach the decimal point in the dividend, we put it simultaneously in the question and only then we continue to divide. क्योंकि जैसे ही हम डिविडेंड पे पॉइंट के पास पहुंचेंगे उसी वक्त हम क्वेश्चन के पास भी पॉइंट लगा देंगे और तभी हम आगे डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे. Step 3, we continue the division in the same way as whole numbers by bringing down the digits in the decimal part. और हम उसी तरीके से जैसे होल नंबर्स में डिवीजन का प्रोसेस फॉलो करते हैं सेम तरीके से हम डेसिमल पार्ट का भी फॉलो करेंगे. If the last remainder is not zero, we may insert as many zeros as are needed. कि अगर लास्ट रिमाइंडर जीरो नहीं है तो हम जितने जीरोस चाहे उतने जीरोस ऐड कर सकते हैं. दिस डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिविडेंड. और ये वैल्यू हमारे डिविडेंड की कहीं पर भी चेंज नहीं करता है. So 16.62 divided by 3 gives 5.54. Clear? Now as you can see, proper division method हमें 129.36 का भी डिवाइड करके दिखाया गया है 15 से and the question comes 8.624. Clear? Now next we have division of decimals by 10, 100 and 1000. अब इन डेसिमल्स का डिवीजन 10, 100 और 1000 से कैसे होता है? Let's see. So it is move the decimal points to the left by the number of places equal to the number of zeros in the divisor. अब जितने भी zeros होंगे with the divisor, right? तो हम उसी में नंबर ऑफ डिजिट्स के पीछे पॉइंट को लगाते जाएंगे. जैसे कि एग्जांपल है 324.6 डिवाइडेड बाय 10. क्योंकि एक जीरो है हमारे पास तो हम पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. मल्टीप्लिकेशन में हमने उसे राइट साइड में शिफ्ट किया था बट डिवीजन में हम उसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे. Divisor has 1 0. Move the decimal point 1 place to the left in the dividend. Right? 324.6 divided by 100.
3.246. Divisor has 2 zeros. Move the decimal point 2 places to the left in the dividend. 324.6 divided by 1000 is equal to 0.3246. Divisor has 3 zeros. Move the decimal point places to the left in the dividend. Clear? Now, we have the exercise in which the question says multiply the following. जल्दी से इन्हें multiply करते हैं. So it is, the question says 3.12 multiplied by 8. So let's do it. 8 2s are 16. 8 1s are 8 plus 1 9. Then we have the decimals. 8 3s are 24. So hence the answer becomes 24.96. Then multiply each of the following by the numbers 10, 100 and 1000. हर नंबर को अब हमें 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? सो इट इज वेरी सिंपल. हमें सिर्फ पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते जाना है. सो इट इज 3.958. अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 से तो वील गेट 39.58. 3.958 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 से तो वी विल गेट 395.8. 3.958 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1000 से तो हमें मिलेगा 3958. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिवाइड द फॉलोइंग. अब हमें इन डिजिट्स को डिवाइड करना है, राइट? सो as we can see, let's take the first part. So let's take this, which is 38.125 divided by 5. So 5 sevens are 35. 8 minus 5 is 3. Then we have a point, so we took a point over here and we copied down 1. 5 6 are 30. Then 1 over here. Then 2. So 5 2s are 10. Minus 2. Then 5 to be carried down. Then 5 5s are 25. Right? So this says 7.652 is the answer. Sorry, 625 is the answer. Correct? Then we have fill in the blanks. अब they are saying कि हमें बताना है 82655 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारा आंसर 8265.5 आ जाए, राइट? सो ऑब्वियसली हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 लग के पॉइंट जो है वो एक डिजिट बाद आ जाएगा, राइट? Clear? So as in the same manner we have to follow these. Now next topic that we have is solving word problems. So it says Tanya bought a book for rupees 152.75. तान्या ने एक बुक खरीदी इतने रुपीस की. A pen for rupees 35.25. एक पेन खरीदा इतने का. And a chocolate for rupees 28.75. और एक चॉकलेट खरीदी 28.75 की. What amount did she spend? तो उसने टोटल में कितना अमाउंट स्पेंड किया? तीनों चीजों की कॉस्टिंग हम इस तरीके से लिख लेंगे, बुक, पेन और चॉकलेट की. और टोटल निकालने के लिए वी विल ऐड ऑल दीज 3 अमाउंट्स इन द सिंपल वे, पुटिंग देम इन देयर प्रॉपर कॉलम्स सो दैट डेसिमल कम्स अंडर डेसिमल. एंड देन द आंसर कम्स दैट तान्या spent total amount that is of rupees 216.75. Clear? Now next, we have the exercise in which we have the word problems. Let's see what they are telling us. So let's pick the third question, which says the cost of one washing machine is rupees 12,845.50. A dealer buys 125 such machines. What is the total cost of all the machines? तो एक डीलर ने 125 मशीनें ऐसी ही सेम खरीदी जिनकी कॉस्ट सेम है, तो उसके पास टोटल कितनी कॉस्ट हो गई उन मशीन्स की? सो इट सेज रुपीज 12,845
845.50 multiplied by 125. So 5 zeros are 0. 5 fives are 25. 25. 5 fives are 25 plus 2, 27. 5 fours are 20 plus 2, 22. 5 eights are 40. 40 plus 2, 42. 5 twos are 10. 10 plus 4 is 14. 5 ones are 5 plus 1, 6. Then 2 zeros are 0. 2 fives are 10. 1 carry 0 over here. 2 fives are 10. 1 carry 11. 2 fours are 8 plus 1, 9. 2 eights are 16. 16 में 1 carry 6 over here. 2 twos are 4. 1 carry 5. 2 ones are 2. Then double cross. 1 zeros are 0. 1 fives are 5. 1 fives are 5. 1 fours are 4. 1 eights are 8. 1 twos are 2 and 1 ones are 1. Right? Then we'll add them. 0, 5, 7, 2 and 1, 3. 5 plus 3, 8. 2 and 9, 11. 11 plus 5, 16. 1 carry. 6 plus 4, 10. 10 plus 4, 14. 14 plus 1 carry, 15. 1 carry. 6 plus 5 is 11. 11 plus 1 is 12. 12 plus 8 is 20. 2 carry. 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 8. Sorry, 4 plus 2, 6. Right? And after that, we need to put a point after 2 digits क्योंकि हमें point दिया गया था 2 digit बाद. So hence, we got the amount that is 6 rupees 6,05,687.50 paisa. Clear? This is how you are going to solve all these problems very easily. Right? Coming up to the chapter at glance, let's see what it says, what all points are being explained in the chapter. Decimals are written in the form of tenth, hundred and thousand. Decimal in forms में लिखे जाते हैं. Like decimals are decimals with the same number of digits after the decimal. Like decimals होते हैं जिसमें एक नंबर में decimals के बाद same number of digits होती हैं. Unlike decimals are decimals with different number of digits after the decimal point. Unlike decimals वो होते हैं जिनमें decimal के बाद अलग अलग number of digits होते हैं. The value of a decimal point remains the same when zeros are added to the right of the digits after the decimal point. कि जो decimal number की value होती है वो same रहती है अगर हम zeros उसमें add करते हैं decimal point के बाद right side में. Right? उसकी value तब change नहीं होती है. When a decimal number is multiplied by 10, 100 or 1000 and so on, the decimal point moves 1 digit, 2 digits, 3 digits and so on to the right respectively. अगर हम किसी भी number को multiply कर रहे हैं 10, 100 या फिर 1000 या फिर और किसी भी 10 के multiple से तो जो decimal point है वो 1, 2 या 3 digits right side पे shift हो जाता है. Clear? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.